Now, reproduction and modern technology. There are many couples who cannot have children because of various reasons. तो ऐसा बहुत सारा couples है जिनको बच्चे नहीं होते हैं बहुत कारणों की वजह, जैसे women में. In women there is irregularity in menstrual cycle. That means every month the menstrual cycle should occur. So there is irregularity in this. Then difficulty in oocyte production. So oocyte is not produced or the egg is not produced. Obstacle in the oviduct. What is the meaning of obstacle in the oviduct? Now we know. So if the egg enters the oviduct, so if there is obstacle in this oviduct, so there is problems may arise. Difficulty in implantation in uterus. So if embryo is formed, then in the uterus it is not implanted. So it is not implanted in the uterus. So these are the problems which are seen in the women. Men also can have problem, that is in semen sperms are absent. If sperms are there, there is slow movement of them. Then if sperms are there, there are anomalies, that is abnormalities in these sperms. So these are the reasons why men cannot have, men or women. If these problems are there in men and women, then such couples cannot have children. तो अगर women में menstrual cycle में irregularity रहेगा, मतलब हर महीने वो regularly नहीं आता है, difficulty oocyte मतलब egg produce नहीं होता, production of egg possible नहीं होता है, obstacle in the oviduct. तो ये oviduct है, तो egg इसमें से पास होके आना चाहिए, तो ये ऑब्स्टिकल्स रहेगा, तो उसमें डिफ़िकल्टी होता है एग्स को पास होने में. डिफ़िकल्टी इन इम्प्लांटेशन, अगर एम्ब्रॉय बना तो यूट्रस में इम्प्लांट होना चाहिए, और अगर ये इम्प्लांट नहीं होता है तो भी प्रॉब्लम होगा. मेन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि स्पर्म्स ही नहीं बनता है, अगर स्पर्म बनता है तो बहुत स्लोली मूव होता है, नहीं तो ये स्पर्म एनॉमलीज और स्पर्म्स में रहता है, मतलब एबनॉर्मलिटीज़ रहता है इन स्पर्म्स में. सो सच बिकॉज ऑफ सच रीजन्स the couples cannot have children. But such childless couples can also have children by advanced medical technology. तो ऐसे चाइल्डलेस कपल्स को भी बच्चे हो सकते हैं. कैसे हो सकता है? एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी यूज़ करके, जैसे कि IVF. व्हाट इज़ IVF? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सेकेंड वन इज सरोगेसी, एंड द थर्ड वन इज स्पर्म बैंक और semen bank. So by these three methods also a childless couples can have children by this modern advanced medical technology. Now we will discuss about this three methods separately. Now the first method, in vitro fertilization, that is IVF. If a childless couples have problems like less sperm count or obstacles in oviduct etc., they can use this method to have children. तो first वाला method क्या है? In vitro fertilization, उसका short form क्या है? IVF. तो अगर कोई चाइल्डलेस कपल्स को प्रॉब्लम्स जैसा लेस स्पर्म काउंट प्रॉब्लम्स रहता है या ऑब्स्टिकल इन ओविडक्ट रहता है, तो उनको ये मेथड यूज़ करके दे कैन हैव चिल्ड्रन. दे कलेक्ट द स्पर्म, द डॉक्टर्स कलेक्ट द स्पर्म from the husband and oocyte from the wife, and then it is fertilized externally. It is fertilized externally in a test tube, and an embryo is formed. Then in appropriate time, this embryo is implanted in the uterus of mother. And such childless couples can have children. तो अगर
चाइल्डलेस कपल्स को बच्चे नहीं होता है तो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर्स जो रहता है वो स्पर्म हस्बैंड से कलेक्ट करता है, ओसाइट जो वाइफ से कलेक्ट करता है और दोनों को फर्टिलाइज एक्सटर्नली करता है इन अ टेस्ट ट्यूब और एम्ब्रॉय फॉर्म करता है और अप्रोप्रिएट एकदम सही टाइम देख के ये एम्ब्रॉय को इम्प्लांट करता है इन द यूट्रस ऑफ मदर। सो दिस वे चाइल्डलेस कपल कैन हैव children by IVF. Second method is surrogacy. Now some women have problems in implantation of embryo in uterus. So in such a case they use this method. तो अगर कोई woman में embryo implant uterus में implant करना problem पड़ता होगा तो ये मेथड यूज़ करते हैं। इसमें भी वही करते हैं। इन दिस मेथड ऑल्सो सेम प्रोसीजर इज यूज। द स्पर्म्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड, द ओसाइट इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइफ एंड इट इज फर्टिलाइज्ड एक्सटर्नली इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एम्ब्रॉय इज फॉर्म्ड। इन अप्रोप्रिएट टाइम दिस एम्ब्रॉय इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ मदर। इन द प्रीवियस वन इट was implanted in the uterus of mother, but in the second case it is implanted in the uterus of another woman whose uterus is working properly. So in appropriate time this embryo is implanted in the uterus of another woman, not of mother, of another woman whose uterus is proper functioning of uterus is there. Now this such woman in whose uterus the embryo is implanted is known as surrogate mother. तो इसमें भी प्रोसीजर सेम ही है। डॉक्टर्स जो रहता है स्पर्म हस्बैंड से कलेक्ट करता है, ओसाइट इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइफ और इसमें भी फर्टिलाइज एक्सटर्नली इन अ टेस्ट ट्यूब करते हैं और एम्ब्रॉय फॉर्म करते हैं और अप्रोप्रिएट टाइम में प्रॉपर टाइम में ये एम्ब्रॉय इम्प्लांट करता है यूट्रस में, लेकिन माँ के यूट्रस में नहीं करता है, कोई और वुमेन के यूट्रस में करता है जिसका यूट्रस प्रॉपर फंक्शन करता है। और जो वुमेन जिसके यूट्रस में ये एम्ब्रॉय इम्प्लांट किया है वो वुमेन को बोलते हैं सरोगेट मदर। सो बाय दिस मेथड ऑल्सो चाइल्डलेस कपल्स कैन हैव चिल्ड्रन। Now the third method is sperm bank or semen bank. So if men have problems, if the men have problems in sperm production, then they can use this method to have children. Such couples can use the sperm of another man. So if they can use the sperm of another man, and from where do they get this sperm? They get the sperm from the sperm bank. This sperm bank is similar to the blood bank. If a person needs blood, then the person goes to a blood bank to get the blood. Similarly, if a person needs sperms, then they go to the sperm bank. Any men, now who are the people who, just like we donate blood and store it in the blood bank, same way any men after complete medical checkup, so after doing the complete medical checkup they can donate the sperms and these sperms are stored in the sperm bank. The name of the donor is always kept a secret, so we don't know the name of the donor. तो अगर कोई मैन को स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता है तो ऐसे कपल स्पर्म बैंक या सीमेन बैंक मेथड से भी कर सकता है। तो ये स्पर्म कहाँ से मिलता है? जैसे दे गेट द स्पर्म, ये स्पर्म्स कहाँ से मिलता है? स्पर्म बैंक से। यहाँ पे ये कपल्स यूज़ करेगा स्पर्म्स ऑफ अनदर मैन। स्पर्म बैंक क्या होता है? इट इज सेम लाइक ब्लड बैंक। जैसे अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत हो तो वो ब्लड बैंक में जाएगा, वैसे किसी कपल्स को अगर स्पर्म की ज़रूरत हो तो वो कहाँ जाएगा? स्पर्म बैंक में। यहाँ पे क्या होता है स्पर्म बैंक में? कोई भी मैन जिसका कंप्लीट मेडिकल, उसमें कोई बीमारी नहीं रहना चाहिए, कंप्लीट मेडिकल चेकअप के बाद वो मैन अपना स्पर्म डोनेट कर सकता है और ये स्पर्म्स कहाँ पे रखा जाता है? स्पर्म बैंक में। लेकिन नेम ऑफ द डोनर, जो जिसका स्पर्म लिया जाता है, जो कपल किसी का भी स्पर्म लेगा तो किसका स्पर्म है वो नाम हमेशा सीक्रेट रहता है। तो यहाँ पे क्या करता है वाइफ का, द डॉक्टर कलेक्ट द ओसाइट ऑफ द वाइफ, द स्पर्म फ्रॉम द स्पर्म बैंक एंड दे
fertilize it externally by IVF technique. So the same method is used how we had done by the first method, IVF technique, and then it is implanted into the uterus of mother. तो यहाँ पे भी जो डॉक्टर है वो वाइफ का ओसाइट लेगा, लेकिन मैन में स्पर्म्स नहीं है, इसके लिए स्पर्म कहाँ से लिया जाएगा? स्पर्म बैंक से लिया जाएगा, और IVF मेथड के तरीके से ही इसको एक्सटर्नली फर्टिलाइज किया जाएगा, और जो एम्ब्रॉय बनता है वो मदर का यूट्रस में इम्प्लांट किया जाएगा. सो द सेम मेथड इज यूज्ड how we had done in IVF technique. Now the next topic is about twins. Now when two embryos, not usually only one embryo is formed, but when two embryos are developed simultaneously and two offsprings or two children are delivered simultaneously, then such offsprings are called as twins. तो अगर दो एम्ब्रॉयज, यूजुअली सिर्फ एक ही एम्ब्रॉय बनता है, लेकिन अगर दो एम्ब्रॉय डेवलप हुआ साइमल्टेनियसली और दो बच्चे लोग एक साथ डिलीवर्ड हुआ साइमल्टेनियसली, तो ऐसे बच्चों को बोलते हैं ट्विन्स. देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ट्विन्स, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक. तो ट्विन्स का दो टाइप होता है, एक तो है मोनोजाइगोटिक और दूसरा है डाइजाइगोटिक. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोनोजाइगोटिक. नाउ इन मोनोजाइगोटिक, इफ अ सिंगल जाइगोट, when oocyte and sperm fuse together to form a single zygote, that is one zygote, and this divides and redivides by mitotic division to form embryo, and when this embryo within 8 days of zygote formation, within 8 days of zygote formation, it breaks up into two. It breaks into two embryos, two separate embryos, and these embryos get implanted. They get implanted separately in the uterus, separately in the uterus, and develop separately. Then such twins are called as what? Such twins are known as monozygotic twins. Why they are known as monozygotic twins? Because only single or only one zygote was formed, and zygote was only one, but embryo was two of them. So because only one zygote was formed, that is why it is known as monozygotic twins. Now these twins are very similar to each other, and they have same gender. Either both will be boys or both will be girls. So what is the meaning of same gender? Same gender means either both will be boys or both will be girls. तो सिंगल, इसमें मोनोजाइगोटिक में क्या होता है, अगर समझो ओसाइट और स्पर्म फ्यूज होके एक सिंगल जाइगोट बनता है, और ये सिंगल जाइगोट डिवाइड और रीडिवाइड होके एम्ब्रॉय बनता है, और विद इन 8 days ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट बनने का 8 दिन के अंदर अगर ये सिंगल एम्ब्रॉय डिवाइड होके 2 एम्ब्रॉय बनता है, ये रहा जाइगोट और ये रहा एम्ब्रॉय, ये एम्ब्रॉय ब्रेक होके 2 सेपरेट एम्ब्रॉय बन गया, और दोनों भी इम्प्लांट हो गया यूट्रस में और सेपरेटली डेवलप होता है यूट्रस में. तो ऐसे यूट्रस में एंड डेवलप सेपरेटली, दे आर नोन एज मोनोजाइगोटिक. इसको मोनोजाइगोटिक बोलते हैं. मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल या एक जाइगोट. इसमें सिर्फ एक ही जाइगोट बना था, इसके लिए इसको मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बोलता है. और ये दोनों ट्विन्स एकदम सिमिलर दिखते हैं एक दूसरे से, और उनका जेंडर भी सेम रहता है. जेंडर बोलेगा तो क्या है, दोनों या तो दोनों भी लड़के होंगे या दोनों भी लड़की होंगे. लेकिन अगर इफ जाइगोट embryo, if the embryo breaks after 8 days, after 8 days of zygote formation,
So if the embryo breaks after 8 days of zygote formation, the previous one was within 8 days, मतलब 8 days के अंदर अगर break होता है और इसमें 8 days के बाद में अगर break होता है, then the twins will be joined to each other. There is a possibility that the twins will be joined to each other. And sometimes some organs are common to both of them. So if these organs are common to both of them, then such twins are known as what? Conjoined twins. Or it is also known as Siamese twins. तो अगर 8 दिन के अंदर अगर एम्ब्रॉय ब्रेक होता है तो दोनों अलग अलग सेपरेटली डेवलप होता है, तो दोनों ट्विन्स एक दूसरे से एकदम सिमिलर रहता है और ये जॉइंट नहीं रहता है, दोनों का जेंडर भी सेम रहता है, दोनों भी बॉयज़ रहेगा या तो दोनों भी गर्ल्स रहेगा। लेकिन अगर एम्ब्रॉय 8 दिन के बाद ब्रेक हो गया, ज़ाइगोट फॉर्मेशन के 8 दिन के बाद ब्रेक हुआ, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है कि ये ट्विन्स विल बी जॉइंट टू ईच अदर, ये ट्विन्स एक दूसरे से जुड़े हुए जॉइंट रहेगा। कभी कभी इनके ऑर्गन्स भी कॉमन रहता है, एक ही ऑर्गन दोनों के लिए रहता है, तो ऐसा ट्विन्स को बोलते हैं कॉन्जाइंट ट्विन्स और सियामेस ट्विन्स। Now next is dizygotic twins. Now what is dizygotic twin? Sometimes 2 eggs are released, one on this side and one on this side. So 2 eggs are released at the same time, and when the sperm comes inside the female reproductive organ, so one sperm will go and unite with this and the other sperm will go and unite with this oocyte. तो कभी कभी 2 oocyte रिलीज होता है, एक ए साइड में और एक ए साइड में, और जब स्पर्म्स एंटर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तभी एक स्पर्म इधर जाएगा और एक स्पर्म इधर जाएगा और दोनों फ्यूज़ होके 2 ज़ाइगोट बनेगा। सो देयर आर 2 ज़ाइगोट। अभी ये 2 ज़ाइगोट बनता है, तो 2 ज़ाइगोट था, इसके लिए इसका नाम क्या हुआ? डाइज़ाइगोटिक। डाई का मतलब क्या? 2 ज़ाइगोट्स आर फॉर्म। इन द प्रीवियस केस इन मोनोज़ाइगोटिक ओनली 1 ज़ाइगोट was formed, hence it was known as monozygotic. Now this zygote will divide and redivide to form 2 embryos. So 2 embryos are formed and both will implant in the uterus separately. तो 2 ज़ाइगोट बना और दोनों ज़ाइगोट डिवाइड और रीडिवाइड होके 2 एम्ब्रॉय बनता है और दोनों भी एम्ब्रॉय यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है सेपरेटली और सेपरेटली डेवलप हो जाता है, एंड इन दिस वे twins are born, that is dizygotic twins are born. Over here 2 zygotes are there, therefore genetic variation will be there. So genetically they will be different to each other. And both of them will not look similar to each other. In the other case, in monozygotic twins, both of them were similar to each other. They were looking same, they were not different, they were similar to each other. But in this case, both the twins will not look similar to each other. Either both will be boys or both will be girls. Or one will be boy, one boy and one girl. But here both the boys will not be similar to each other, both the girls will not look similar to each other. The boy, if it is one boy and one girl, they will also not look similar to each other. तो dizygotic twins में क्या होता है? 2 oocyte, एक oocyte इधर रिलीज होता है और एक oocyte इधर रिलीज होता है, बहुत रेयरली होता है। तो जब स्पर्म्स एंटर करता है तो एक स्पर्म इस oocyte के साथ फ्यूज़ होता है और ये एक स्पर्म इस oocyte के साथ फ्यूज़ होता है और 2 ज़ाइगोट बनते हैं। यहाँ पे 2 ज़ाइगोट बनते हैं, इसके लिए इसका नाम डाइज़ाइगोटिक ट्विन्स बोलते हैं। डाइज़ाइगोट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाई? 2।
2 जाइगोट बनता है। पिछले वाला केस में सिर्फ एक ही जाइगोट बना था, इसके लिए उसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलता है। और ये जो जाइगोट है वो डिवाइड और रीडिवाइड होकर एम्ब्रॉय बनता है और दोनों एम्ब्रॉय यूट्रस में इम्प्लांट होता है और डेवलप सेपरेटली होता है। सिंस यहाँ पे 2 जाइगोट यानी 2 ओसाइट और 2 स्पर्म सेपरेटली फ्यूज हुआ था और 2 डिफरेंट जाइगोट बना था, इसके लिए दोनों का जीन्स भी एकदम अलग होगा, सो दे विल बी जेनेटिकली डिफरेंट। और दोनों भी ट्विंस जो रहता है वो दोनों सेम नहीं दिखेगा, एकदम अलग दिखेगा दोनों से। क्यों अलग दिखता है? बिकॉज दे आर जेनेटिकली डिफरेंट, जीन्स दोनों का एकदम अलग है। यहाँ पे या तो दोनों भी लड़के होंगे या दोनों भी लड़की होगी, या एक लड़का या एक लड़का और एक लड़की होगा, मगर यहाँ पे दोनों भी सिमिलर नहीं रहेगा। सो समटाइम्स 2 oocytes are released. So 2 oocytes are released. Both the oocytes are fertilized by 2 separate sperms. So both the oocytes are fertilized by 2 separate sperms. Therefore 2 zygotes are formed. Therefore 2 embryos are also formed, and both the embryos gets implanted in the uterus separately, and thus dizygotic twins are delivered. Now private organs, whether it's a boy or a girl, it needs to be maintained clean time to time. तो अगर लड़की हो या लड़का हो, वो प्राइवेट ऑर्गन्स, उनका प्राइवेट ऑर्गन्स हमेशा क्लीन रखना चाहिए टाइम टू टाइम, नहीं तो बहुत सारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स अराइज हो सकता है। ड्यू टू इलिटरेसी, शाइनेस, कस्टम्स, ट्रेडिशन, दीज देयर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हमारे देश में इलिटरेसी की वजह से, यानी बहुत लोग अनपढ़ है, शाइनेस यानी शर्म के वजह से, कस्टम्स और ट्रेडिशन के वजह से we are not able to talk freely about this topic. So there is lack of awareness. लोगों को अवेयर ही नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। बहुत सारा सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, in short it is known as what? STD. So there are various sexually transmitted diseases. Now out of this, 2 of them will be discussing. What are they? Syphilis and gonorrhea. Now these both are sexually transmitted disease. Now what are the symptoms of syphilis? Syphilis का symptoms क्या है? Occurrence of chancre, that is patches on various parts of a body, patches appears. Then rash, fever, inflammation of joints, alopecia. What is the meaning of alopecia? There is loss of hair, etc. Now what is the symptoms of gonorrhea? Gonorrhea का symptoms क्या है? Painful and burning sensation during urination. जब यूरिन पास करता है तो पेन होता है और बर्निंग सेंसेशन होता है, oozy ऑफ पस निकलता है थ्रू पेनिस एंड वजाइना, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, anus, throat, eyes, etc. So these are the various symptoms of syphilis and gonorrhea. Now what is population explosion? When there is excessive growth of population, अगर short period में बहुत population increase होता है तो उसको बोलता है population explosion. इसके वजह से बहुत सारा problems भी आता है. What are the various problem? Decrease in per capita income. What is the meaning of that? The national, whatever income is collected in a nation, the national income gets divided among the population. So if the population is more, so each person will get less amount of income. Supposing a person has to get 10,000, he will get 5,000 instead of that. Why? Because of the increase in population. Another problem is unemployment. Most of the people don't get unemployment. Because of this, there is increase in loan, so people start taking loan. Then there is a stress in natural resources. Natural resources, etc. For example, in agriculture, when we grow vegetables, fruits, grains, etc. If population is more, then that vegetables or the agriculture product will not be sufficient for each one of them. So this also is another problem if there is too much of population. The only solution for this is what? Population control. So we have to control the population. For example, by doing family planning, etc.
So family planning has become an important solution in order to reduce the population explosion.